अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सईदा फ़ातिमा। आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। आज हमने जी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना है क्रिमिनोलॉजी का, द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। जी बहुत इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, और अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्टिव के हवाले से भी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जो है जी अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं जी कितने एमसीक्यूज़ हैं जी इसके। आई थिंक 51 एमसीक्यूज़ हैं जो हमें आज इसमें कवर करने हैं इस वीडियो में। मेरी कोशिश यही है कि इसी वीडियो में जो है वो मैं आज जल्दी से कवर कर दूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट एमसीक्यूज़ देखिए, हु प्रोमलगेट्स द ऑर्डिनेंस? ए प्रेसिडेंट, बी पीएम, सी सीएम एंड डी गवर्नर। जी तो ए वाले का है जी, वन का है जी ए ऑप्शन, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। बी सेकंड का देखें, द प्रेसिडेंट इशूज ऑर्डिनेंस व्हेन द डैश इज नॉट इन सेशन ऑन द ए पार्लियामेंट, बी कैबिनेट, सी सेनेट एंड डी नन ऑफ दीज। तो टू का है जी ए, व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। अच्छा, थर्ड का है, ऑर्डिनेंस इज इशूड फॉर द पीरियड ऑफ ए 3 मंथ्स, बी 4 मंथ्स, सी 5 मंथ्स एंड डी 6 मंथ्स। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 मंथ्स। राइट। नेक्स्ट देखें, वेयर इज़ द ओनली चिल्ड्रन जेल इन पंजाब? ए मुल्तान, बी लाहौर, सी रावलपिंडी एंड डी बहावलपुर। ए ऑप्शन है मुल्तान, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है रावलपिंडी एंड डी है बहावलपुर। तो 4 वाले का है जी डी ऑप्शन, बहावलपुर। नेक्स्ट देखें, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन, बी वुमेन, सी ओल्ड मैन, डी नन ऑफ दीज। तो बी वाले का है जी ए ऑप्शन, चिल्ड्रन। नेक्स्ट देखें, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, ए है जी 12 ऑफ 2000, 11 ऑफ 2000, 16 ऑफ 2000 एंड 17 ऑफ 2000। देखें जी 6 वाले का है जी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000? ए रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन सोसाइटी, बी टू प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रन ऑफ द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन्वॉल्व इन क्रिमिनल लिटिगेशन, सी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुवेनाइल कोर्ट्स एंड डी इज ऑल ऑफ अबव। तो 7 वाले का है जी डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 एक्सटेंड टू द होल ऑफ ए पाकिस्तान, बी बलूचिस्तान, सी पंजाब एंड के एंड डी इज सिंध। तो डी वाले का है जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम एज ऑफ चाइल्ड इज मेंशन इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000? ए 16 ईयर्स, बी 17 ईयर्स, सी 18 ईयर्स एंड डी 21 ईयर्स। जी 9 का है जी सी ऑप्शन, 18 ईयर्स, 18 years, right? Next है जी 10th MCQs, Juvenile Justice System Ordinance 2000 came into force in A option है 1st July 2000, B है 1st July 2001, C है 1st July 2002 एंड 4th है 1st July 2003। तो 10 वाले का है जी A ऑप्शन, 1st July 2000, 1st July 2000, right? नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000? ए 12, बी 14, सी 15 एंड डी 19। तो 11 वाले का है जी सी ऑप्शन, 15, 15। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 इज रिलेटेड टू ए डेफिनेशंस, बी लीगल असिस्टेंस, सी जुवेनाइल कोर्ट्स एंड डी डिटर्मिनेशन ऑफ एज। तो 12 वाले का है जी ए ऑप्शन, definitions. Section 3 of Juvenile Justice System Ordinance 2000 is related to A definitions, B legal assistance, C juvenile courts and determination of age. तो 13 वाले का है जी B option, legal assistance. Section 4 of Juvenile Justice System Ordinance 2000 is related to A definitions, B legal assistance, C juvenile courts and D determination of age. तो 14 वाले का है जी C option, juvenile courts.
15 वाले का सेक्शन 7 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 इज रिलेटेड टू ए डेफिनेशंस, बी लीगल असिस्टेंस, सी जुवेनाइल कोड्स एंड डी डिटर्मिनेशन ऑफ एज। तो 15 वाले का है जी डी ऑप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ एज। Next, Section 5 of Juvenile Justice System Ordinance is related to A. Procedure of juvenile courts, B. No joint trial of a child and adult person, C. Juvenile courts and the determination of age। तो 16 वाले का है जी B ऑप्शन, 16 वाले का है जी B ऑप्शन, नॉट joint trial of a child and adult person, no joint trial of a child and adult person, B option, right? Next देखिए section 6 of juvenile justice system ordinance 2000 is related to A is procedure of juvenile courts, B is no joint trial of a child and adult person, C juvenile courts and D is determination of age। तो 17 वाले का है जी A option, procedure of criminal court juvenile courts, right? Next देखिए a place where child offender may be detained and given education and training for their mental, moral and psychological development is called A. Borstal institution, B. National institution, C. Special institution and D. None of these। 18 वाले का है जी A option, Borstal institution। Next देखिए a person who at the time of commission of an offence has not attained the age of 18 years। A is child, B is man, C is mad and D is none of these। तो 19 वाले का है जी A option, child। Next देखिए a parent or a person who has actual care of a child and includes such relative who is willing to bear the responsibility of child is A. guardian, B. friend, C. lawyer and D. none of these। 20 का है जी A option, guardian, guardian। Next, juvenile court means a court established under section dash of juvenile justice system ordinance A4, B5, C6 and D7। तो 21 का है जी A ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें जी, dash means an offense punishable under any law for the time being in force। A is offense, B is crime, C is abduction and D is none of these। तो 22 का है जी A ऑप्शन। नेक्स्ट देखें जी 23 का, प्रोबेशन ऑफिसर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड अंडर द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस ऑफ A 1976, B 1960, C 1955 and D is 1964। 23 का है जी B ऑप्शन, 1960, 1960। नेक्स्ट देखें, अ पर्सन परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 इज अपॉइंटेड बाय A. प्रोविजनल गवर्नमेंट, B. डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, C. फेडरल गवर्नमेंट एंड D इज नन ऑफ दीज। तो 24 वाले का है जी A ऑप्शन, 24 वाले का है जी A ऑप्शन, provisional government। Next, every child who is accused of the commission of an offense or is a victim of an offense shall have the right of legal assistance at the expense of A. state, B. guardian, C. father and D. none of these। तो 25 वाले का है जी A ऑप्शन, state, state। Next, a legal practitioner appointed by the state for providing legal assistance to a child accused of the commission of an offense or victim of an offense shall have at least A. 3 years standing at the bar, B. 5 years standing at the bar, C. 7 years standing at the bar and D. none of these। 26 का है जी B ऑप्शन, 26 का है जी B ऑप्शन, 5 years standing at the bar। 27 का है जी विच गवर्नमेंट हैज़ पावर टू स्टैब्लिश वन और मोर जुवेनाइल कोर्ट्स फॉर एनी लोकल इज विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन। A. प्रोविजनल गवर्नमेंट, B. डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, C. फेडरल गवर्नमेंट एंड D. नन ऑफ दीज। तो 27 का है जी A ऑप्शन। Provisional government shall establish one or more juvenile courts for any local within its jurisdiction with the consultation of A का है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, B सीनियर सिविल जज, C चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड D नन ऑफ दीज। तो 28 का है जी A ऑप्शन, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। Next, the High Court may confer powers of juvenile courts on A. courts of session, B. judicial magistrate of the first class, C. B. both A and B and D none of these। तो 29 का है जी C ऑप्शन,
बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट डी। नेक्स्ट देखिए 30 का, presiding officer of juvenile courts with powers of judicial magistrate of the first class is appointed by A. provincial government, B. district government, C. federal government and D. high court। 30 का है जी डी ऑप्शन, हाई कोर्ट। High Court. Next, the High Court may appoint presiding officers of juvenile courts from amongst practicing advocates having at least A. 3 years standing at the bar, B. 5 years standing at the bar, C. 7 years standing at the bar and D is none of these। तो 31st का है जी सी ऑप्शन। 31st का है जी सी ऑप्शन, 7 years standing at the bar, right? Next देखें, which statement is correct? The juvenile court shall have the exclusion jurisdiction to try cases in which a child is accused of commission of an offence. B. The juvenile court shall not have the exclusive jurisdiction to try cases in which a child is accused of commission of an offence. C. Both and D. none of these। 32 का A option। The juvenile court shall have the exclusive jurisdiction to try cases in which a child is accused of commission of an offence। Next देखिए जी 33rd वाला, on taking cognizance of an offence the juvenile court shall decide the case within A. 5 months, B. 4 months, C. 6 months and D. 9 months। तो 33 वाले का है जी B ऑप्शन, 4 months। 4 months। Next, which statement is correct? A. No joint trial of a child and adult person, B. joint trial of a child and adult person, C. both are correct and D. none of these। 34 का है जी A option, no joint trial of a child and adult person। 35 का देखिए, no child shall be charged with or tried for an offence together with an adult under section of क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड। यहाँ पे है जी A254, B का है जी 236, सी ऑप्शन है 239 एंड डी है 235। तो 35 का है जी सी ऑप्शन 239। 239 राइट। नेक्स्ट है जी a juvenile court shall unless provided otherwise in this ordinance follow the procedure provided for in the law। A. PPC, B. CRPC, C. CPC and D none of these। जी देखिए ज़रा 36 का है जी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है जी CRPC। नेक्स्ट, अब जुवेनाइल कोर्ट शैल नॉट ऑर्डिनरली टेक अप एनी अदर केस ऑन अ डे व्हेन द चाइल्ड केस ऑफ अ चाइल्ड अक्यूज्ड इन फिक्स फॉर डैश ऑन सच अ डे। 37 का है जी एविडेंस, बी है ट्रायल, सी है डिक्री एंड डी है नन ऑफ दीज। तो 37 का है जी ए ऑप्शन, 37 का है जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द डैश ऑफ अ केस द जुवेनाइल कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ अ such child decency or morality direct any person to withdraw from court for such period as the court may direct। A है evidence, B trial, C है जी डिग्री एंड डी है नन ऑफ दीज। तो 38 वाले का है जी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है जी ट्रायल, ट्रायल। ठीक है। नेक्स्ट देखें 39 वाला, when a child who has been brought before a juvenile court is found to be suffering from serious illness, the court shall send such child to a hospital or medical institution where treatment shall be given to the child at the expense of the A state, B guardian, C father and D none of these। तो 39 का है जी ए ऑप्शन, स्टेट, स्टेट। Next, if a question arises as to whether a person is a child or not, the juvenile court shall believe on A medical report, B birth certificate, C school certificate and D none of these। तो 40 का है जी ए ऑप्शन, 40 का है जी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखें,
A child shall be released on bail if being accused of any offense punishable for imprisonment for life has been detained for such an offense for a continuous period exceeding dash and whose trial for a such offense has not concluded. A 1 year, B 6 months, C 9 months and D none of these. तो 41 का है जी B option 6 months. 6 months. Next, a child shall be released on bail if being accused of any offence not punishable with death or imprisonment for life has been detained for such an offence for continuous period exceeding dash and whose trial for such an offence has not concluded. A है जी 1 year, B 6 months, C 4 months and D none of these. तो 42 का है जी C ऑप्शन. 42 का है जी C ऑप्शन 4 months. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी when a child of the age of dash or above is arrested the court may refuse to grant bail if there are reasonable grounds to believe that such child is involved in an offense when in its option is serious, heinous and gruesome, brutal, sensational in character. Age 15 years, B 16 years, C 14 years and D none of these. तो 43 का है जी A option 15 years. Next, where on conclusion of an inquiry or trial, the juvenile court finds that the upper child has committed an offence, then notwithstanding anything to the contrary contained in any law for the time being in force, the juvenile court may A. Release on probation, B. Release on parole, C. Release on bond surety and D is none of these. तो 44 का है जी A option. 44 का है जी ए ऑप्शन रिलीज ऑन प्रोबेशन. नेक्स्ट देखिए चाइल्ड ऑफेंडर इज सेंट टू अ बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन अंटिल शी अटेन्स द एज ऑफ डैश और फॉर द पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच एवर इज अर्लियर. ए है जी 18 ईयर्स, बी है 10 ईयर्स, सी है 15 ईयर्स एंड डी है नन ऑफ दीज. तो 45 का है जी ए ऑप्शन 18 ईयर्स. राइट. नेक्स्ट है जी you reduce the period of imprisonment or probation in the case where the court is satisfied that further imprisonment or probation shall be A. unnecessary, B. necessary, C. less than 10 days and D. none of these. तो 46 का है जी A option unnecessary. Next, direct the child offender to be released on probation for good conduct and place such child under the case of guardian for the good behavior and well-being of the child for any period not exceeding the period of A. imprisonment awarded to such child, B. 45 days, C. 35 days and D. none of these. तो 47 का है जी A option imprisonment awarded to such child. A option. Next है जी a child convicted on a trial by a juvenile court or any other person on his behalf may within dash from the date of such order prefer an appeal. A 30 days, B 45 days, C 35 days and D none of these. तो 48 का है जी A option 35 days. 35 days. 49 का देखिए द प्रोविजनल गवर्नमेंट आर एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर आर इक्विटल पास्ड बाय अ जुवेनाइल कोर्ट में विद इन डैश प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर. ए 30 days, बी 45 days, सी 35 days एंड डी नन ऑफ दीज. तो 49 का है जी ए ऑप्शन 30 days. राइट. 50 का देखिए which government may by notification in the official gazette make rules for carrying out the purposes of juvenile justice system ordinance. A. district governments, B. federal governments, C. provincial governments and D none of these. तो 50 का है जी C option provincial government. Provincial governments. Next, according to the Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, the greatest percentage of juvenile offenders being held in custody is currently in which state? A. Texas, B. Illinois, B. New York and D. Georgia. G. A option Texas. Texas, right?
तो ये हैं जी आपके जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के एमसीक्यूज़ जो आज हमने जो है वो कवर कर लिए हैं। ठीक है, 51 एमसीक्यूज़ थे इसके आज हमारे पास। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट वन है, इन्हें लाजमी कवर करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें क्रिमिनोलॉजी में। राइट, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।